You want to be successful, right? But everyone around you doesn't really seem to like it. Let's understand the successful teenagers. Power, position, money, status. Be beshram for what you want. You want money? Then how can you get it? You might think, is this the right age to think about all of this? ट्रस्ट मी, मैं आपकी जगह थी. मैं भी कभी एक साल पहले यूट्यूब पर सर्च करती थी कि इज इट ओके मैं ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रही हूँ, कि मैं ज़्यादा ही टेंशन ले रही हूँ इस चीज़ों के बारे में, बाकी जैसे बच्चे कर रहे हैं वैसे ही मुझे भी करते रहना चाहिए ना. इफ़ यू हैव द सेम डाउट्स, यू आर ऑन द राइट प्लेस. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. आई एनाया सिंह रघुवंशी वेलकम यू ऑल टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो. जैसा कि मैंने बताया, मैं भी कभी आपकी जगह थी जो सोचती थी कि यार ज़्यादा करियर ड्रिवन होना अच्छी बात भी है या नहीं, या फिर मुझे भी अपने बाकी सारे दोस्तों की जगह पार्टी करनी चाहिए, घूमने जाना चाहिए, ट्रिप्स पे जाना चाहिए, और बाकी वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी वैसा करना चाहिए. या फिर मुझे सिर्फ अभी स्कूल पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए. मैं ज़्यादा सेल्फिश तो नहीं हो रही कि मुझे करियर, मनी ये सब जल्दी चाहिए. वी ऑल आर वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल. हमें एक ही चीज़ चाहिए. Some want money, some want power, some want position, some want state. हमारे एस्पिरेशन सेम ही हैं, बस कोई उन्हें ओपनली बताता है, कोई छुपा कर रखता है. आज की दिस वीडियो विल बी द अल्टीमेट गाइड फॉर यू इफ यू फील लाइक कि आप बाकी बच्चों में फिट इन नहीं हो पा रहे हो एंड यू फील लाइक यू आर अ मिलेनियल इन बिटवीन ऑफ जेन जीज. ट्रस्ट मी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके दिमाग में कभी भी ख्याल आया है, यू वॉन. बिकॉज पहली चीज़ तो टू एक्नॉलेज इट कि बाकी जो लोग कर रहे हैं वो समवट सही नहीं है और मुझे कुछ डिफरेंट करना है. ये फीलिंग अपने आप में आना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप खुद से उस चीज़ को एनकाउंटर नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता. सो कंग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी क्लियर कर लिया है. If you are interested in the topics like being the best version of yourself and improving day by day, make sure you subscribe this channel because this channel is literally filled with content. Sometimes we do masti, sometimes we chit chat, sometimes I share my life experiences with you. But this is thoroughly a space where you and me can grow and evolve together as a community. Now, let's just get started with today's video. समटाइम्स यू माइट फील लाइक कि यार मुझे ना करियर में पहले कुछ कर लेना चाहिए. मे बी आई शुड जस्ट फ्रीलांस ऑन समथिंग. मे बी मुझे अपना कुछ साइड बिजनेस स्टार्ट करना है. मे बी आई वांट टू वर्क, मुझे एक्सपीरियंसेस चाहिए, मुझे इंटर्नशिप्स करनी है. यू वांट टू वर्क एंड दैट्स ओके. इसको एक तो पहली बात, वर्क को स्लेवरी की तरह ट्रीट करना, वी शुड जस्ट स्टॉप इट. बिकॉज अगर आपको काम करना है एंड यू लव वॉट यू आर डूइंग, देन उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है, राइट? बट हमें हमेशा काम को इतने बुरे तरीके से दिखाया जाता है विद सोसाइटी एंड विद एवरीवन अराउंड अस कि ऐसा काम करने का मन कर रहा है. सो बोरिंग. मतलब अगर आपको आपके काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, देन यू आर प्रोबेबली डूइंग समथिंग रॉन्ग. एंड व्हेन, जब मैं उस फेज में थी, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क करती हैं, क्या नहीं करती हैं, इन दैट होल 1 year आई हैव इवॉल्व्ड सो मच एज अ पर्सन. मैंने कई सारी नई चीज़ें सीखी हैं, कई सारी नई बुक्स पढ़ी हैं, अपने आप को इवॉल्व किया है, नई चीज़ें जानी हैं. इट्स बीन एन होल एक्सपीरियंस माई सेल्फ. बट अगर मैं वहाँ पर सोच के बैठ जाती कि करियर ड्रिवन होना इंपॉर्टेंट है या नहीं, शायद आई माइट लूज द मोटिवेशन टू एक्चुअली गेट स्टार्टेड एंड डू समथिंग. दिस यूट्यूब वुडंट हैपन. मैं इतनी सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रही हूँ वो नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज मैंने सोचा होता कि यार अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे अभी अपने करियर के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए. हो सकता है अभी एट दिस स्टेज यू माइट नॉट फाइंड द राइट काइंड ऑफ फ्रेंड्स जो शायद इतने करियर मोटिवेटेड ओरिएंटेड नहीं हो. अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो उसके लिए प्रॉपर आपको 12th तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, फिर आपका कहीं कॉलेज में एडमिशन होगा, वहाँ जाके आप 4 साल फिर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जाके यू विल बी कॉल्ड एज एन इंजीनियर. सेम गोज विद द डॉक्टर. आपको MBBS की डिग्री करनी पड़ेगी टू हैव दैट DR इन योर प्रीफिक्स. बट कभी कभी अपने आप को अपस्केल करने के लिए यू डोंट रियली नीड अ रीजन कि करियर ओरिएंटेड ही होना है. यू जस्ट वॉन्ट द बेस्ट फॉर योर सेल्फ एंड दैट शुड बी इनफ. मुझे उस टाइम पे अच्छी फ्रेंड्स और गाइडेंस नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, कि जो मुझे कहते कि कामना अनाया, इट्स ओके एंड इट इज़ वेरी वेरी फाइन दैट यू आर टेकिंग टेंशन फॉर योर करियर. यू नो, टीनेजर्स आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में, आर टेकिंग मोर स्ट्रेस देन देयर प्रीवियस जनरेशन कि उनके करियर में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा. देयर इज प्रेशर बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. वी नो कॉम्पिटिशन की तो कोई सीमा ही नहीं बची है. इट इज़ लाइक गोइंग अप एंड अप डे बाय डे.
सोशल मीडिया, पीपल आर पुटिंग एंड फ्लैशिंग देमसेल्व्स दैट हाउ सक्सेसफुल दे आर, उन्होंने कितनी अच्छी गाड़ी ले ली है, वो कितने अच्छे घर में रहते हैं, उनके पास कितना अच्छा मोबाइल फोन है, दे हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द आईफोन, दे हैव एवरीथिंग, उनके शूज अच्छे हैं, उनके बैग्स ब्रांडेड हैं, दे वेयर गुड क्लोथ्स। हर चीज से हम अपने आप को फिर कंपेयर करने लगते हैं। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, डोंट गेट मी ऑन दिस, इंडियन पेरेंट्स, you know what I mean. Expectations from शर्मा जी का बेटा is never 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 ending. आपके ऊपर वो प्रेशर शायद अभी नहीं डाला जा रहा है और आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं बेटा भी सिर्फ पढ़ाई करो, डोंट फोकस ऑन मनी, डोंट रन बिहाइंड दीज थिंग्स, दीज आर सेकेंडरी इन लाइफ, फोकस ऑन योर सेल्फ, योर हेल्थ, योर स्टडीज. Eventually what they want you to study because you could get a good college, get a good job and earn good amount of money. At the end of the day, it's all about that. So if you want money at a young age, that's not wrong. Legally, if you are taking steps against it, not something, fishy nahi karna hai kuch. Economic crisis. The gold prices are touching the sky. The petrol is expensive. The grocery, the house rent, it is going like crazy. और इस इकोनॉमी में टू सर्वाइव यू नीड गुड फंड्स, यू नीड अ फाइनेंशियल बैकअप एंड सिक्योरिटी प्लान्स, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और फिर टैक्सेस भी बढ़ते ही जा रहे हैं. यू नीड टू हैव अ गुड सपोर्ट, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. जितना थाली में खाना ज़्यादा होता है उतना हम ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि हम क्या खाएं. सेम गोज विद अस टुडे. हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं दैट वी गेट कंफ्यूज्ड कि एक्चुअली में हमें अपने जीवन में करना क्या है. हमें कभी डॉक्टर बनना है, हमें कभी इंजीनियर बनना है, हमें कभी इंटीरियर डिजाइनर बनना है, हमें कभी ग्राफिक डिजाइनर बनना है, हमें कभी लॉयर बनना है. वी आर नॉट क्लियर विद वॉट वी वॉन्ट. इज बीइंग करियर ओरिएंटेड इन टीन्स रॉन्ग? द आंसर कैन नॉट बी यस और नो. इट completely depends on. No, it's not wrong. If you want to be a cricketer and if you start working, preparing your body from a young age, do you think it will harm you when you will be 20? No, right? Then why this? Explore interests and strength. Self-assessment. Know the things on which you have your command. Know the things that you might not be able to do that much effortlessly. Knowing your strengths and weaknesses is a crucial part for you to getting started. Research careers. Make sure you note down all the things that you are good in and then match the careers that you can develop in future according to what you have written down. This will give you a better perspective on what you can actually do. बहुत बार हमें नहीं पता होता है in what we are good in or not. This is the easiest way to find out the best career options for you. Goals. Long-term goals, short-term goals. Long-term goals means in next 5 years, what do you see yourself? You want to buy a house, you want to buy a car. I mean, I'm just telling, not as a teen you can buy a house or a car, but I'm telling like what in next 5 years are your plans. In next 5 months or 6 months is like a roughly estimate that we take. Like in 6 months, what do you want? You want to study hard, you want to learn a new language, you want to develop a new skill. What are the things that you want to develop throughout this period of time? Make sure you have a list, at least 10 of the long-term goals and 10 of the short-term goals. Noting them down would really give you a clarity on where you stand right now and would also prepare you for the future, that these are the certain things that you want to achieve and you have to put in effort every single day for that. Education and training, again a very very important thing that you need to know, that पढ़ाई नहीं छोड़ सकते. You might not like the curriculum, you might not like the things or subjects that you're studying currently, but at least having the basic education, 12th pass is important, doing a graduation in whatever field you are interested in, but don't just leave कि पढ़ाई तो करनी ही नहीं है. Okay? Focus on your academics wherever you are, in class, in school or coachings, etc. anywhere. Just make sure whatever the academics, whatever the chapters, whatever the subjects that are thrown in your way, you are attending them. I'm not saying be a topper, get 95%, excel the class, be the top number 1, be in top 5. What I'm saying is at least be better than the average. आज से 1 साल पहले मैं आपकी पोजीशन पर थी. When I was confused कि भाई मतलब मुझे पढ़ाई भी करनी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बेसिक एजुकेशन होना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे पता है मुझे 12th तक तो मिनिमम पढ़ाई करनी ही है. उसके बाद क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज कम्प्लीटली माई चॉइस, बट दिस इज समथिंग विच इज मैंडेटरी. हर बच्चे को 12th तक पढ़ाई करनी है. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट पीपल डू इज आस्क फॉर अ डिग्री. No matter how successful you are, they will instead ask for, oh, what you have studied. Everything comes to that single point. So it's better that you put in effort in learning.
Don't just learn because you have to finish off exams. Learn because you want to gain that knowledge, not because you have to learn certain things that keeps your interest in. Take relevant courses. Your school might not be teaching the right things that you want to study. Your coaching might not be teaching the things that you want to study. Take courses. If you have this mobile phone or whichever device you're watching this video on, laptop, screen, anywhere, if you're watching this video, you have the access to internet. And that, my friend, is the biggest weapon. Use that. Everything is available on freely. YouTube, Google, everywhere. You just need to go search, hunt for that thing, learn it, and amplify that thing in your life. Gain experience. Every single company wants to hire someone who is already experienced, is already familiar to the work environment. And the better it is to start from early years, right? When you'll be competing with the people doing graduation, and when you already have experience, the chances of your placement will be so much more higher because you have already gotten into the work mode experience. Internships is something which a lot of people are trying on. Do free internships, do paid internships. Just get in the hang with the flow of work. Part-time jobs. Even if you have this passion for studying, make sure you gather like a couple of children around of your society, colony, and teach them. This is the easiest that you could do. Gather up your friends and ask them, okay, exam है, मैंने चैप्टर पढ़ लिया है, let me just revise it through for you. तुम्हारा चैप्टर पढ़ने में आ जाएगा, मेरा रिविजन हो जाएगा, just this. And ask them for the feedback, like मैंने अच्छा पढ़ाया, मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया. This ladder of career, when you want to climb up high and high, you need to start learning the basics, the foundations, and that's what you get when you do these things. It will give you experiences, on ground reality on how people actually work. Networking is important. Connect with professionals. Connect with the people who are already living the life that you aspire, that you want for yourself. And trust me, it's a big saying that if you are sitting with 5 fools, you will be the 6th one. If you are sitting with 5 millionaires, you will be the 6th one. This is the most popular saying around the world. Everyone knows it, but हम अपनी company को seriously लेते ही नहीं हैं. The kind of people you are spending your time with, you will end up being like them. If you get terrified from this thought, change your company, change the people that you are surrounding yourself with. Mentorship. Throughout this journey, when you are working, switching, managing a lot of things, you need to have a good kind of mentor, and that you can build by having a good network. Teachers are very important in our life. The ones जिन्होंने आपको ABCD सिखाई, the ones जिन्होंने आपको 2 की table सिखाई, the ones जो आपको in future life lessons सिखाएंगे, all of these teachers are valuable. And for you to find the best kind of teacher for yourself, mentor that suits the goal, that already has done certain things. You might need to do a lot of mehnat to find the right kind of mentor for yourself, but all the mehnat will be paid off if you find the right kind of people with you who will support you regardless. A millionaire will never judge you for starting your first business. So if you feel like that people are judging you, you're not surrounded with the right kind of people. Choose your company. I'm saying it again because this is crucial. Build a resume. As silly as it sounds, it is serious. Have a space where you have documented all of your certificates, all of your medals, all of your trophies, all of the achievements, all of the courses that you have done, everything at one place. If you are a graphic designer and even just do it for fun, make sure you have a proper place where you display all of your work. If you're an artist, make sure you have a proper folder where you display all of your work. Even if your career is not related to that work, even then, just make it. Just make it for the sake that it is a memory or that you'll never open it. Just make it. Just document these little things. It will be so much more helpful. You will thank me later. Develop soft skills. Again, a very important thing which a lot of people forget, that we just want to work on the computers, etc. Who will work on yourself? Who will work on you? You have to be presentable to a lot of people. You will be there in front of a lot of people. Are you presentable? Are you confident enough? Can you speak? Are you introvert? Do you have the confidence? Do you have the right vocabulary? Do you know English or any other language? Do you have the command on the language? Do you know how to speak well? These little soft skills of doing mannerism to basic etiquette and chivalry comes along the way. And these, no teacher, no parent, no friend, didi, bhaiya, no one is going to come and teach you, hey, you also need to brush your teeth before an important meeting. No one is going to come and tell you this. It's you who needs to take care of your needs. Stay informed. When you are in a conversation, the basic things that people expect from you is you know about news, current affairs, what are the things going on, a little bit of geopolitics, a little bit of everything from here and there.
In today's world, master of one thing doesn't survive. You have to be jack of all trades. You need to know every single thing going out there. And you might be like, Anaya, how is this possible? It is possible because you have to do it. Improving communication skills and skills on which how you can interact better with people is something which you need to develop. I have developed it for myself and it will work for me, but you have to develop it for yourself first, then it will work for you. Follow the industry trends. What are the things that are going right now? What are the current events that needs to be talked about? What is the current headlines and news going around? Not the ones which are reporters are screaming on TV screens, the actual on reality news which is going on. Personal development. This is important. I've said it again, I'll say it again. Let me know in the comment section if you want a separate video on the skills that you need to learn in order to develop a good future for yourself. I would love to make one for you. And even if I will get a one comment saying this, I will just make it. What you guys want, I will deliver. Maintain a balanced life. As important it is to maintain your career, be career driven, it is also important to actually be present in your relationships that are going on with your friends, with your family, or anywhere out there. Just make sure you don't lose the essence of life in order to work, if you know what I'm saying. It is very easy at this stage to be burnt out, take a lot of stress. So make sure you're managing all of your stress and not piling up things in your head. Actually, you have some people whom you can just talk and figure things out with, because otherwise it will be so lonely for you. And it is lonely for me as well. So we are just surviving here in this world, you, me, both of us.